Yeah, Prachi. Yes, ma'am. Yeah, sister has joined, so I think we can begin. Okay. And even the resource person has joined. Yes, I can see Swagata. Welcome, Swagata. Thank you very much. So we'll begin. Good afternoon, everyone. I am Prachi. Yeah. Yes, sister. Sister, may we start? May we start, sister? May we start, sister? I think she's lost connectivity. Ma'am, I think she's trying to join in from another device. Oh, yes, yes. She's there in 2 devices. Now it's okay. Yeah. Should I begin? Yeah, Sister, sure. with your permission? Yeah, sure. Actually, I logged in with the computer, but the voice was not audible. Okay. Okay, Now, okay. yeah. Okay, sister. Good afternoon, everyone. I am Prachi Politiga, your host for the 5-day international workshop on research capacity building for early career researchers. I welcome you all to the 3rd day of the workshop. Before we begin, small announcements. Kindly mute yourselves and keep your video off during the session so that the session is uninterrupted. But we would request you to unmute yourself and also the video while the question and answer session is going on at the end of the program. The queries can be posted in the Zoom chat box and will be taken up with the resource person at the end of the session. Thank you for your patient hearing. Honorable Principal and Chief Patron, Dr. Sister Jyoti. Honorable Vice Principal, Sister Shobha. Honorable Resource Person for the session, Professor Swagata Basu. Our workshop coordinator, Dr. Debjani Roy, HOD PG Department of Geography. Members of our advisory committee, organizing team, faculty members of various colleges and universities, research scholars, students, and my dear colleagues. Good afternoon once again. On behalf of the organizing team, I extend a warm welcome to all of you to the 3rd day of this workshop. With the august presence of our principal and chief patron and esteemed resource person, may I now request our principal, Dr. Sister Jyoti, for her address and her blessings. Sister. Thank you, Prachi. A very warm good afternoon to you all. Respected Professor Swagata Basu, the chief speaker of the day from Merit University. Respected organizers, Dr. Debjani Roy and her team, Dr. Pinky and Prachi. We are here on the 3rd day of the 5-day international workshop on research capacity building for early career researchers. And I congratulate the organizers that the 3rd day have come with its blessings. And I'm sure all the researchers are benefiting from all these final and prepared workshop on international workshop. And today's topic being using quantitative methods to research. I'm sure all the researchers will be benefiting from Professor Swagata Basu. Before we proceed for the deliberation, I request you all to bow down to seek God's blessings, because He's the source of all knowledge, He's the origin, and all transmission is from Him.
Let's seek his blessings. Prachi, sound. Yes, ma'am. Sound, ma'am, it's playing on my device actually. Just 1 minute, let me see. पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। वो कभी ना ऊँघेगा, वो कभी ना सोएगा। देखो इस्राएल का रक्षक है खुदा, देखो इस्राएल का रक्षक है खुदा। मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा, मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। Yes, God is our help in all our endeavors. Let's trust in him and begin. May you have pleasant time. May God bless you all. Thank you. Thank you, sister. May I now request our workshop coordinator, Dr. Devjini Roy, to kindly introduce our resource person for the session. Thank you, Prachi. Good afternoon, sister, and good afternoon, all the participants. It's my honor and privilege to introduce today's resource person to the team. Professor Swagata Basu is an associate professor and head of the Department of Geography at SSP College, Hapur, under Meerut University. Swagata is a feminist geographer, and her research interests are in the areas of violence against women, intimate partner violence, as well as issues related to livelihood and women's rights.
She has completed her graduation from Loreto College, Kolkata, and her post-graduation and PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi. She has been the recipient of Mamta Swaika Memorial Prize for Excellence from Loreto College, Kolkata, as well as she has received the President's Award for the Best Paper Presentation at Indian Association for Women's Studies Conference in 2017. She has been a member of Textbook Development Committee and has contributed to the book Fundamentals of Human Geography. And she has also participated as an expert to review and finalize refresher courses for PGT at the NCRT. She is also a part of the team of Prithvi Evam Bhugol and volume of Concise Hindi Encyclopedia, Central Institute of Hindi, New Delhi Center, 2008. She has worked in a number of, she's contributed her work to a number of national and international journals, and she has also completed 2 minor research projects as co-principal investigator, funded by the Institute of Eminence, University of Delhi, and is currently a team member of the Delhi City Research Team of Gen Urb Project based at City Institute, York University, Toronto, Canada. She is also a trainer and observer for the UGC scheme of capacity building for women managers in higher education for sensitization, awareness, and motivation module and management skills enhancement modules on advocacy in institutions of higher education. Her list is endless, and she is a bright young geographer who is also an academician and a researcher par excellence. We are happy to have you with us today, and I hope your lecture will ignite some new knowledge or some new ideas amongst the participants. Before I leave the floor to you, may I remind the participants that I have already shared the 5 easy points to write a research proposal. Kindly go through the points. It's not difficult at all, and you can always connect with me. Thank you so much, Swagata, for accepting the invitation and doing the honors. We are proud to have you with us today at Nirmala College. Thank you. Thank you very much, Professor Roy, for this generous introduction, and thank you for inviting me. I would also like to put on record my deep gratitude to Sister Jyoti for inviting me to this workshop. I have shared my presentation. Would somebody be sharing the screen? Yes. Prachi? 1 minute, ma'am. Ma'am, actually, Yeah. I'm trying to download it, but due to some network issue or something, it's not. But I can share the. Ma'am, do you have it on your side? I'll allow you to share. If it's not working, then I'll figure something out. No, I'll do it myself. Ah. Just let me share my screen in that case. Ma'am, it will allow. You just try it once. Otherwise, I'll make something work. Okay. So, Swagata, may I request you that keep it simple, and can you be a little bilingual also, because we have people from the eastern part of the country. Yes, so yes. you can be bilingual also. Thank you so much. Thank Yeah. you. That's the whiteboard. Ma'am, share screen. Share and then screen. Share screen. Open the PPT. Okay, 1 minute, ma'am. I'll do it from my side. I'll use the Google Slides for that. If you can, please. Is this visible, ma'am? Yes, it is visible. Yeah, it's visible. Yeah. Will you be able to zoom it a little? Yes, ma'am. Just 1 minute. All right. Thank you so much, Prachi. Yeah. So I would say that, I'm really very happy to be a part of this workshop, because as Professor Roy would tell you, when we were doing research or beginning with research, there was hardly any scope for us to go and learn how to do qualitative techniques. So, like she and I and a lot of other feminist geographers have been struggling on our own, trying to understand and get the nuances of qualitative research. But I believe once you get the feel of qualitative research and you understand the benefits and the kind of leeways you have with qualitative research, I am sure you will all want to apply it in your own research.
So, Prachi, will you go to the next slide? Yes, ma'am. Yeah. Yeah. So I would like to begin with one of my very favorite quotes. And this is from Leo Tolstoy's classic Anna Karenina. So here he says that all happy families are alike, but every unhappy family is unhappy in its own way. अब आप बताइए ये क्वांटिटेटिव टेक्निक से आप कैसे बताएंगे? ये तो बाइनरी हो जाएगा, ये तो हैप्पी है 1, अनहैप्पी है 0, ठीक है? तो अनहैप्पी के अंदर इतने तरह के जो अनहैप्पी लोग हैं या अनहैप्पी फैमिलीज है, ये तो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव टेक्निक से ही आप बता सकते हैं कि कितने तरह के अनहैप्पीज है और क्यों वो अनहैप्पी है. So, I think this qualitative, to understand the techniques of qualitative research, the realization to understand the issues of diversity and difference. I think this quote is one such quote which really elicits that kind of a feeling. Next slide, please. Yes. So I will start with what is feminist methodology, if there is any. So is there a feminist methodology? Hartcourt and others, they say that feminist methodologies are one that delineate the method as one that is engaged in creation of counter narratives against which the traditional models of research and science, as well as what do? They foreground the experiential and the embodied nature of doing research. And feminist methodologies also focus on the everyday. और ये जो everyday studies है, it is still an overlooked aspect of research. And इस methodology से what we do is जो दिखता नहीं है ना, we try to visualize the messy facets of doing feminist research. So how we as feminist scholars, we shape research questions. हम कैसे हमारे research questions develop करते हैं field में जाके. How do we understand our positionalities? Like if I am in a certain social location, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी अलग अलग positionalities है. तो अगर मैं अपने ही social location में किसी के interview ले रही हूँ, तो मैं तो उनके जो समझ है उसको अच्छी तरह से समझूंगी. पर कोई जो मेरे social location की नहीं है, जिनका जिंदगी मैंने जिया नहीं है, तो वैसे कैसे मैं उनके पर्सपेक्टिव को समझ सकती हूँ? तो वी शुड अंडरस्टैंड आवर पोजिशनलिटीज एंड शेयर आवर रिसर्च. ये फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी का एक important aspect है that we should not keep our research within the academia alone. हमें क्या करना चाहिए? हमें तो academia के beyond activism में जाना चाहिए और ये जो feminist knowledge हम produce कर रहे हैं, इस feminist knowledge को academia के बाहर हमें disseminate करना चाहिए. कैसे करेंगे? और जैसे more and more research scholars will work on various topics of feminist research, then only it will get disseminated into society. Can we go to the next slide? So, ये जो कुछ aspects है feminist methodology का, जो feminist methodology को बिल्कुल बाकी methodology से अलग करते हैं. पहला है intersectionality. Intersectionality basically एक tool है जिससे हम क्या करते हैं कि class, रेस, ऐसे जो फॉल्ट लाइंस है सोसाइटी में, इन फॉल्ट लाइंस से कैसे हम सोसाइटी एन मास सब लोग एक बराबर नहीं है, इस चीज को दिखाने में समर्थ होते हैं. तो और हमारे देश में जैसे कास्ट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉल्ट लाइंस. सो ये इंटरसेक्शनलिटी जब हम समझते हैं तो हम क्या समझते हैं? हम वो जो स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर और वो स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑपरेशन है, इनको भी समझने में हम समर्थ हो जाते हैं. फिर दूसरा है कि हम एम्बॉडीमेंट को समझते हैं. एम्बॉडीमेंट मतलब कि कैसे हम एब्स्ट्रैक्शन को समझते हैं कि हमारे मेमोरीज, जो कहानियां हैं, जो इलस्ट्रेशंस, ड्राइंग्स देख के, या जो हमारे Have we lost connection? Have we? No, ma'am, the connection is there. Can you? Yeah. So embodiment is like through reification, memory, stories, illustrations, drawings, जो cultural influences है, जो हमारे identity और हमारे self को develop करता है. हमारा जो sense of self है वो कैसे develop होता है? तो यही through embodiment. तीसरा है रिलेशनलिटी. इससे हम क्या करते हैं कि रिलेशनशिप्स को और कनेक्शंस को एक्सप्लोर करते हैं कि हमारे जो आइडियाज है वो फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कैसे वो अराइज होता है.
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी में हम यूज करते हैं वो है इमोशंस। तो हम ये इमोशन का रोल देखते हैं रिसर्च में कैसे यूज किया जाता है, एंड हाउ टू एक्सेस एंड अंडरस्टैंड द फॉर्म्स ऑफ नोइंग। हम किस तरह से किसी एस्पेक्ट के बारे में जानते हैं यूजिंग द एथिक्स ऑफ केयर। केयर इज टेकन to minimize the power relationship between a researcher and the researched। ये हम लोग सब जानते हैं कि रिसर्चर एक अपर मतलब हायर पावर पोजीशन में होता है और जिन पर हम रिसर्च कर रहे हैं। तो फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी क्या करता है, इस पावर डिसबैलेंस को नेगेट करने के, पूरा तो नेगेट नहीं हो सकता है, फिर भी पूरी कोशिश करते हैं कि इसको किस तरह से नेगेट किया जाता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वी आर लिसनिंग टू साइलेंसेस। ये क्वांटिटेटिव टेक्निक में नहीं होता है। अगर कोई आंसर नहीं देते हैं तो वो नील हो जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। बट इन क्वालिटेटिव टेक्निक्स, as you will see, as I will discuss one of those case studies, you will see that how silences are so important to read silences as a part of qualitative techniques. Maybe going to the next slide. Yes, ma'am. तो ये जो स्लाइड है ना, ये थोड़ा सा टेक्स्ट बुकिश है। इससे आपको ये पता चलता है कि क्या बेसिक डिफरेंस है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में। क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है, जो आप सब जानते हैं, और क्वालिटेटिव रिसर्च सब्जेक्टिव होता है, मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग का यहाँ पे एक प्राइमेसी दिया जाता है। यहाँ डिडक्टिव रीजनिंग होता है, मतलब ऑलरेडी थियोरी है, उससे हम लोग डेटा को ढूंढते हैं। यहाँ क्या है, शुरू तो हम डिडक्टिव रीजनिंग से ही करते हैं, पर जब हम अपना फील्ड वर्क और डेटा कलेक्शन करते हैं, फिर हम अपना एक थियोरी भी यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव में हमारा फोकस हमेशा नैरो और कंसाइज होता है, पर क्वालिटेटिव में हमेशा बहुत ब्रॉड और कॉम्प्लेक्स होता है। और एप्लीकेशन यहाँ पे क्या है कि हम क्वांटिटेटिव में थियोरी को टेस्ट करते हैं, पर क्वालिटेटिव में हम थियोरी टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम नया थियोरी को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और जानने का तरीका क्या है, रिसर्च करने का तरीका क्या है, बेसिस ऑफ नोइंग इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम ढूंढते हैं, पर यहाँ हम मीनिंग्स ढूंढते हैं, नया डिस्कवर करते हैं रिलेशनशिप्स। और क्वांटिटेटिव में जो टूल्स हम यूज करते हैं वो बेसिकली है नंबर्स और स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। और क्वालिटेटिव रिसर्च में हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, वर्ड्स और नैरेटिव्स, है ना, शब्दों के साथ हम मीनिंग को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और स्कोप देखिए कितना बड़ा है क्वालिटेटिव रिसर्च में। क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप एक सिंगल रियलिटी को ही मेजर और जनरलाइज कर सकते हैं, पर क्वालिटेटिव रिसर्च में आप मल्टीपल रियलिटीज को एक साथ लेके चल सकते हैं, और कैसे इंडिविजुअल का परसेप्शन समय, टाइम और स्पेस में, मतलब अलग अलग जगह में कैसे बदलता है और समय के साथ साथ कैसे बदलता है, ये भी आप लोग क्वालिटेटिव रिसर्च से आप लोग इसको, यू कैन ब्रिंग इट आउट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Yeah. So now I think this is a very important kind of a scheme जिससे हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च को हम अपने फ्रेमवर्क में ला सकते हैं। आप लोग भी यहाँ पे एक रिसर्च का फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। इफ यू फॉलो दिस इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो यहाँ जो क्वालिटेटिव टेक्निक है, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी में बेसिकली 3 साइकिल होता है। पहला साइकिल है डिजाइन साइकिल, दूसरा साइकिल है एथनोग्राफिक साइकिल, और तीसरा साइकिल है एनालिटिकल साइकिल। ये मैंने हटर और हेनिक के किताब से लिया है। तो पहला हम शुरू करते हैं डिजाइन साइकिल। अब इस डिजाइन साइकिल में आपका पहला पॉइंट जान कहाँ से शुरुआत है, इट इज इन दैट लिटरेचर एंड थियोरी, जो आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में, ऊपर के सर्कल का राइट हैंड साइड में, लिटरेचर एंड थियोरी। जब हम पहले पढ़ेंगे कोई भी टॉपिक पे, हम अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर को पहले उसको पढ़ते हैं, उसमें से हम थियोरी ढूंढ कर निकालते हैं, उसी से हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनता है, और उस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बेसिस पे ही हम अपना फील्ड वर्क का अप्रोच डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम अपने रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं। फिर हम आते हैं सेकेंड फेज में। सेकेंड फेज है हमारा एथनोग्राफिक साइकिल, जिसको हम डेटा कलेक्शन तो नहीं कहेंगे, हम यहाँ कहेंगे इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो इसमें फर्स्ट स्टेज क्या है, हम अपना
रिसर्च इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करेंगे कि कैसे हम उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। क्या आप इन डेप्थ इंटरव्यू लेंगे, क्या आप फोकस ग्रुप डिस्कशन करेंगे, ये सब हम बताएंगे वंस वी टेल यू द स्कीम। कौन सा रिसर्च इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमें जो पार्टिसिपेंट है, हम क्वालिटेटिव रिसर्च में कभी भी रेस्पोंडेंट नहीं कहते, वो भी इक्वल है ना हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ रिसर्च कर रहे हैं, तो हम उसको हमेशा उनको पार्टिसिपेंट कहेंगे। तो पार्टिसिपेंट कैसे हम रिक्रूट करेंगे, उनको कैसे हमारे रिसर्च में ज्वाइन कराएंगे। उसके बाद हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे जो हमारा डेटा है, और जब हम वो करेंगे उसी समय हम धीरे धीरे इंफरेंस भी निकालते रहेंगे कि हमारा क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है। इसके बाद हम लास्ट साइकिल में जाते हैं जो है एनालिटिकल साइकिल। इस एनालिटिकल का साइकिल का पहला फेज है डेवलप कोड्स। जब हम कोड डेवलप करते हैं, वो कोड को हम पहले डिस्क्राइब करते हैं, फिर हम एक दूसरे से उसको कंपेयर करते हैं अलग अलग केसेस के साथ, फिर हम कैटेगराइज और कंसेप्चुअलाइज करते हैं। उसके बाद हम एक थियरी डेवलप करते हैं जो हमारा अपना ग्राउंडेड थियरी है। क्यों? क्योंकि हमने जो डिडक्टिव वो ऊपर का वो जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क लिया था, उस फ्रेमवर्क के साथ अपना डेटा कलेक्शन करके, उस डेटा से जब हम अपना नया थियरी बिल्डिंग कर रहे हैं तो वो ग्राउंडेड है। तो इसीलिए हम अब एक नया थियरी डेवलप कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस साइकिल? कैन यू सी? इसमें है कि आप किसी भी वक्त किसी भी फेज में आगे पीछे जा सकते हैं। मतलब जब आप पार्टिसिपेंट को रिक्रूट कर रहे हैं एथनोग्राफिक साइकिल में, आपको लग रहा है कि मुझे पार्टिसिपेंट ही नहीं मिल रहा है, ऐसा मैंने डिजाइन कर लिया रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, तो आप पीछे जा सकते हैं। आपके रिसर्च क्वेश्चन आप बदल सकते हैं, ऐसे रिसर्च क्वेश्चन आप बदलेंगे कि अब आपको पार्टिसिपेंट मिलेगा। और फिर एनालिटिकल साइकिल में देखिए, जब आप कोड्स डेवलप करते हैं तो आप देखते हैं कि मेरे जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स था उसमें से तो मैं कोड डेवलप नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं क्या करूँ? वापस मैं एथनोग्राफिक साइकिल में आ सकती हूँ एंड आई कैन ट्वीक माई रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, और फिर मैं इस तरह से मेरे रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स को ट्वीक करूंगी क्योंकि अब मुझे पता है मुझे कैसे कोड्स चाहिए, तो वो कोड्स जैसे मैं जेनरेट कर पाऊं जो डेटा मैं कलेक्ट करूं। Can we move to the next one, please? Yes. So हम क्या करते हैं कि पहले हम डिजाइन साइकिल में देखते हैं, हम डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों फ्रेमवर्क को साथ लेकर चलते हैं। और पहले हम क्या करते हैं कि वो एक डिडक्टिव फ्रेमवर्क ही लेकर हम शुरू करते हैं, क्योंकि हमें हमारा थियोरेटिकल पोजीशन को एक्सप्लिसिट मतलब क्लियर करना है कि हम कौन से थियोरेटिकल पोजीशन से हम काम करना शुरू कर रहे हैं, ये हमें पहले क्लियर करना पड़ता है। तो वी विल कंसेप्चुअलाइज अ जनरल थियरी और फिर उससे हम स्पेसिफिक केसेस में जाएंगे। तो जो ओरिजिनल डिडक्टिव स्कीमा है हमारा, जो हमें वो जो स्कीमा हमें मिला है थियरी से, वो हमारा एटिक पर्सपेक्टिव है। एटिक पर्सपेक्टिव क्यों? क्योंकि वो जो थियरी हमने पढ़ा है लिटरेचर से, वो तो एक एक्सटर्नल आइडिया है ना, किसी और ने क्या पता क्वांटिटेटिव टेक्निक से वो थियरी बनाया है, तो वो हो गया एटिक पर्सपेक्टिव और वो एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव। पर आप जब अपना रिसर्च करेंगे, आप क्या दे रहे हैं? आप तो एमिक पर्सपेक्टिव दे रहे हैं ना। एमिक मतलब वो है द पर्सपेक्टिव ऑफ द पार्टिसिपेंट। तो थियरी में जो पर्सपेक्टिव था, आपके रिसर्च के बाद आप क्या दे रहे हैं? नया रिसर्च, आप नया एक थियरी बना सकते हैं जो एक पार्टिसिपेंट का अंडरस्टैंडिंग है, मतलब इनसाइड, एकदम वो इनसाइडर्स का पर्सपेक्टिव होता है। Please can we move to the next slide? Is this clear? I mean, is this space okay? ये स्पीड ठीक है? कोई ऐसे कुछ, if there is anything, no, you can just stop me and let me know. Like to respond. Participants, are you finding it okay? सब ठीक है? मैडम गुड इवनिंग मैडम। Yes. क्वेश्चनर जो आप वो बोल रहे थे अभी, थोड़ा उसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए ना। वो आएगा, मतलब जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है ना, क्वेश्चनर नहीं होता है, मतलब यही मैं बताऊंगी। हमारा एक इंटरव्यू गाइड होता है, उसमें मैं आने वाली हूँ। ये तो मैं ब्रॉड डिजाइन बता रही हूँ, बहुत एक डिटेल में मैं एक आपके साथ केस स्टडी शेयर करूंगी कि आपको बहुत ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके ओके। मैम ये पूछ रही थी कि उनका पेस सही है या नहीं है, लाइक सब समझ में आ रहा है या नहीं, वो जानना चाहती थी। यस मैम, आ रहा है, अच्छा है। यस मैम।
ओके, तो अब हम देखते हैं, क्योंकि हमारा एथिक्स ऑफ केयर है ना, तो एथिकल इश्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ हम क्या करते हैं, हमें ये बेसिक टेनेट्स हमें फॉलो करना ही है जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। हमें जो पार्टिसिपेंट है उनको कंप्लीट रेस्पेक्ट देना है। कैसे? जो वो पार्टिसिपेंट है हमारा, उनका वेलफेयर हमें बहुत ध्यान से देखना है। अगर आप किसी महिला वेज्ड वर्कर का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, आप जाके दिन के समय जब वो काम कर रही है, जो उनके साथ आप उस समय इंटरव्यू नहीं ले सकते। क्या होगा उससे कि आप उनका जो दिन का वो एक दिन का वेज है वो उनको मिलेगा नहीं, तो आप उनका नुकसान पहुंचा रहे हैं ना। तो इसीलिए उनका जो वेलफेयर है उसको आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा है, जो आपका रिसर्च है उससे सबसे ज्यादा बेनिफिट आपके पार्टिसिपेंट को होना चाहिए, आपको नहीं या किसी एजेंसी को नहीं। जो जो रिसर्च आप करें, ये एथिक्स होना चाहिए कि वो पार्टिसिपेंट को ही सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले। अगर आप गर्ल स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में काम कर रहे हैं, तो आपको ये बताना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां किस तरह से वो स्कॉलरशिप स्कीम का बेनिफिट ले पाए। नेक्स्ट है जस्टिस, क्योंकि ये जो रिसर्च है, ये रिसर्च कभी भी एक्सप्लॉयटेटिव नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ऑलवेज नॉन एक्सप्लॉयटेटिव। आप आपके पार्टिसिपेंट्स को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। जो आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, किसी से आप इनका इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो हमेशा आपको बता के लेना पड़ेगा, उनका परमिशन लेना पड़ेगा, मोस्ट ऑफन लिखित में परमिशन लेना पड़ेगा। और आप किसी भी नाइव कॉन्टैक्ट से, आपका कॉन्टैक्ट है उनसे आप मतलब चुपके से आपने इंफॉर्मेशन ले लिया, ये बहुत ही मतलब एथिकली ये एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर आपको आपके पार्टिसिपेंट का सेल्फ डिटर्मिनेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। उनका राइट है कि वो आपके स्टडी में पार्टिसिपेट करें या ना करें, और अगर कर रहे हैं तो उसके बाद आपको उनको फुल फ्रीडम देना है कि अगर पार्टिसिपेट करने के बीच में उनको लगा कि नहीं, ये स्टडी मैं कंटिन्यू नहीं करूंगी, इनके साथ मैं आपको उनको फुल राइट देना होगा कि वो उस स्टडी को छोड़ के निकल जाए। मतलब उनको आप रोक नहीं सकते कि ऐसा आपने कंसेंट दे दिया तो आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। दूसरा है कि आपको देखना पड़ेगा, यू हैव टू मिनिमाइज द हार्म। आपके इंटरव्यू लेने से किसी का ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, एक लेडी का ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस का आप दोबारा आप उनका इंटरव्यू ले रहे हैं तो उनको वो याद आ रहा है, उनको दोबारा ट्रॉमा हो रहा है, ऐसा आप कभी नहीं कर सकते इस तरह के क्वालिटेटिव रिसर्च में, जिसमें वो ट्रिगर हो जाए, वो मेमोरीज ट्रिगर हो जाए, जिससे उनको फिर से ट्रॉमा पहुंचे या फिर से दुख पहुंचे, उनका नुकसान हो। एंड एनोनिमिटी, हमें हमेशा जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका नाम, उनका पता और उनका जो भी डिटेल्स है वो हमेशा एनोनिमस रखना है। और कॉन्फिडेंशियलिटी रहना चाहिए आपके और पार्टिसिपेंट के बीच में, कि आप कभी भी उनका आइडेंटिटी कभी भी रिवील नहीं करेंगे, और एकदम आखिरी स्टेज तक जब आप पब्लिश भी कर लेंगे, कभी भी उनका आइडेंटिटी आपको रिवील नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन प्लीज। तो अब हम देखते हैं कि हम अब डिजाइन साइकिल से निकलकर हम एथनोग्राफिक साइकिल पर एंटर कर रहे हैं। तो इस एथनोग्राफिक साइकिल का पहला स्टेज है पार्टिसिपेंट रिक्रूटमेंट। तो पार्टिसिपेंट रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, उसके कुछ बेसिक टेनेट्स है कि हमें किस तरह के पार्टिसिपेंट्स चाहिए। क्या हमें एक होमोजेनस ग्रुप चाहिए, क्या एक हमें उसके अंदर सब ग्रुप्स चाहिए, या हमें एक कंट्रोल ग्रुप चाहिए। मैं एक्सप्लेनेशन करती हूँ। एक हम लोग स्टडी करना चाहते हैं कि विमेन इन एकेडेमिया हु आर आल्सो एक्टिविस्ट। ठीक, तो वो महिलाएं जो कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, वो कितना एक्टिविज्म में भागीदारी कर रही है। तो आप ऐसी महिलाओं के जाके इंटरव्यू लेंगे, उनको जाके पूछेंगे कि क्या आप हमारे स्टडी में ज्वाइन करेंगे, कि पढ़ाने के साथ साथ आप कैसे एक्टिविज्म में, सोशल एक्टिविज्म में भी जुड़ी हुई हैं। आप सिर्फ उनका ही नहीं लेंगे, आप उनका भी लेंगे, उनके साथ साथ उन प्रोफेसर्स या उन टीचर्स का भी इंटरव्यू आपको लेना पड़ेगा जो है टीचर्स, पर वो एक्टिविज्म में पार्टिसिपेट नहीं करते। इससे आपको क्या पता चलेगा, जो टीचर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो किस कारण से कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं तो वो किन कारणों से नहीं कर रहे हैं, ये भी आपको पता चलेगा। तो वो ऑटोमेटिकली आपका एक कंट्रोल ग्रुप बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी टू रिक्रूट। ये
स्टेटिस्टिकल नहीं है ना कि हम टी टेस्ट करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि इतना पार्टिसिपेंट हमारे लिए सही था, इससे ज्यादा पार्टिसिपेंट नहीं होगा तो हमारा टी टेस्ट नहीं वैलिड हो रहा है और पार्टिसिपेंट बढ़ाओ। इसमें कोई और टेक्निक है। इसमें हम फॉलो करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सैचुरेशन। आपने पार्टिसिपेंट्स आपने पहले ले लिया, उस पार्टिसिपेंट्स का आपने जब इंटरव्यू लिया, आपको आगे और पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट करना पड़ेगा। जब आप एक्स्ट्रा मार्जिनल पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट करेंगे और आप देखते जाएंगे कि आपके इंफॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब बार बार वही इंफॉर्मेशन रिपीट होता जा रहा है, तब आप समझेंगे कि मेरा सैचुरेशन पॉइंट रीच कर चुके हैं हम, और हमें अब यही हमारा साइज है कि कितना पॉपुलेशन हमें लेना चाहिए था, कितना पार्टिसिपेंट्स हमें लेना चाहिए था। अगर आपको उसके बाद भी अलग तरीके के आंसर्स मिल रहे हैं, अलग रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं जो आपके पहले नहीं मिले, इसका मतलब आपका अभी सैचुरेशन पॉइंट नहीं पहुंचे हैं आप, तो यू कैन अगेन रिक्रूट मोर एंड मोर पार्टिसिपेंट। पर जब आपका सैचुरेशन पॉइंट मिल जाए, आपको वहीं रुक जाना चाहिए। सो मे आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ? यस, अब मैं एक एक करके रिसर्च इंस्ट्रूमेंट बता रही हूँ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है इन डेप्थ इंटरव्यू। ये इन डेप्थ इंटरव्यू एक 1-to-1 मेथड है, मतलब यहाँ पार्टिसिपेंट और रिसर्चर दोनों आपस में बैठते हैं, पर यहाँ कोई क्वेश्चनर नहीं होता है। आपने जो पूछा था, ये क्वेश्चनर नहीं होता है, ये एक सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू गाइड होता है। तो हमारे एक बहुत वेल नोन फेमिनिस्ट जोग्राफर है प्रोफेसर अनिंदिता दत्ता, वो कहती है कि हम जब शॉपिंग में जाते हैं ना, हम एक शॉपिंग लिस्ट लेकर जाते हैं। हम लेते हैं डिटर्जेंट, हम लेते हैं कि सीरियल्स, हम नाम लेकर नहीं चलते कि मुझे केलॉग्स का फ्रूट लूप्स ही लेना है, ऐसे नहीं। तो हम लोग इस तरह से टॉपिक्स लेके चलते हैं। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ऐसा होता है कि हमें इस तरह के इंटरव्यूज, इस तरह के इंफॉर्मेशन लेना है, पर कभी हम वो फुल क्वेश्चन को एक क्वेश्चनर की तरह बना के नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमें फील्ड पे ही उसको एडजस्ट करना है और हमें क्वेश्चंस को लेके बहुत सारा प्रोबिंग करना होता है, तब जाके हमें वो आंसर्स मिलता है या वो इंफॉर्मेशन मिलता है। तो इसीलिए हम एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर लेकर कभी भी क्वालिटेटिव फील्ड वर्क करने नहीं जाते। तो इसे मैं तो ध्यान रखती हूँ उनकी वो याद की शॉपिंग लिस्ट लेकर चलना है। तो ऐसे ही वो इंटरव्यू गाइड जो होता है, वो इंटरव्यू गाइड एक शॉपिंग लिस्ट की तरह होता है। तो इसमें बेसिक क्या हमारे मतलब बेसिक चीजें जो हमें चाहिए एक इंटरव्यू गाइड के लिए, कि आपका स्किल डेवलप होना चाहिए कि आप पार्टिसिपेंट के साथ एक बहुत अच्छा रैपो बना पाए और वो पार्टिसिपेंट को आप मोटिवेट करें कि वो आंसर्स दे, है ना, आप उनको बहुत एनकरेज करें कि वो आंसर्स दे। और ये जो इन डेप्थ इंटरव्यूज हम क्यों लेते हैं, वो इसीलिए लेते हैं कि कैसे लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं, उनका बिलीव्स और परसेप्शंस, उनका आइडियाज क्या है, एंड जो मीनिंग्स पीपल अटैच टू एक्सपीरियंसेस। अच्छा, मैं अगर कुछ एक नया मतलब अब मैं आज एक मेट्रो में जा रही हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंसेस कैसा रहा, मेरे साथ की जो मेरे स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनके एक्सपीरियंस क्या है, अगर मेरी मदर मेरे साथ ट्रैवल कर रही है तो उनके एक्सपीरियंस क्या है, या कभी कोई एक शहर में आए नहीं, उनको पहली बार मेट्रो देखा तो उनके क्या एक्सपीरियंसेस है। ये जो डाइवर्सिटी ऑफ जो मीनिंग्स हम अटैच करते हैं, मेट्रो राइड आपके लिए क्या मीनिंग है, मेरे मदर के लिए क्या मीनिंग है, और जो एक छोटी सी लड़की गाँव से आई उसके लिए क्या मीनिंग है, ये जो डाइवर्स एक्सपीरियंस, ये सिर्फ और सिर्फ इन डेप्थ इंटरव्यू से ही हमें मिल सकता है। और इससे हमें लोगों के जीवन के बारे में, जीवन की कहानी के का हम लोग यहाँ डॉक्यूमेंट कर सकते हैं थ्रू इन डेप्थ इंटरव्यू। और इसके साथ साथ अगर हम उसी सोशल और कल्चरल सेटिंग में उस इंटरव्यू को ले रहे हैं, तो हम वो ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि कौन से कल्चरल सेटिंग में, अगर आप एक एग्रीकल्चरल वर्कर के साथ काम कर रहे हैं तो आप फील्ड में बैठ के अगर उनका इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप वो कॉन्टेक्स्ट भी देख सकते हैं जिस कॉन्टेक्स्ट में वो उनका ये एक्सपीरियंस डेवलप हुआ है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आपके इंटरव्यू गाइड का? आपका एक तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसके बाद ओपनिंग क्वेश्चंस होना चाहिए, उसके बाद की क्वेश्चंस होना चाहिए। ये की क्वेश्चंस बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि इन्हीं की क्वेश्चन से आप
आपका जो इंफॉर्मेशन लेना है पार्टिसिपेंट से वो आप ले सकते हैं, और एक क्लोजिंग क्वेश्चन होना चाहिए क्योंकि आपको रैपो बनाकर रखना होगा आपके पार्टिसिपेंट के साथ। तो इसके स्ट्रेंथ्स क्या है इन डेप्थ इंटरव्यू के? इसके स्ट्रेंथ्स है कि आप लोगों का पर्सनल इंफॉर्मेशन और उनके जो इनसाइट्स है बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स में भी आप उनका जो आइडियाज है, उनका परसेप्शन है, इसको जान सकते हैं। और वीकनेस ये है कि कोई एक्सटर्नल फीडबैक नहीं है, क्योंकि पार्टिसिपेंट जो बोल रहे हैं आपको वही मानना पड़ेगा और कोई एक्सटर्नल फीडबैक उसका नहीं है। और दूसरा है कि जो रिसर्चर है उसको बहुत he has to be very skilled ना, कि आप एक पार्टिसिपेंट से उनकी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं, ये वो एक स्किल डेवलप करना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So, the next four slides, I'm giving you a glimpse of one in-depth interview that I had conducted. So, मैंने पहले क्या बोला कि आपको introduce करना पड़ेगा. तो ये SB या मैं हूँ. तो I begin with saying this research is being conducted to explore the intersection between gender, domestic violence, and law. I'm a researcher carrying out a qualitative research project. मुझे बताना है कि क्यों मैं कर रही हूँ. As a part of this research project, I'm specifically looking at understanding women's perspective on domestic violence and to determine how these perceptions are shaped. Your identity, batana padega, your identity throughout the interview will remain anonymous and all information collected shall be used only for specific purpose of the project. You have complete freedom to leave the interview if it makes you feel uncomfortable. There is no compulsion to answer all questions. Is there any question you would like me to answer before we begin? So my participant CD says, no, we can start. So I ask, I would like to record this interview. आपको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा क्योंकि नहीं तो आप याद नहीं रख सकते. May I have your consent to do so? So she says, yes, you may record. Then I ask, how would you describe yourself? My participant doesn't answer. She's quiet. You remember, we have to read through silences. ये था feminist methodology का एक tool. तो फिर मैं probe करती हूँ. When you think of yourself as a person, who do you feel you are? Are you a mother, a wife? Which role do you feel defines you? तब वो कहती है, दीदी, what can I say who I am? I am a mother of a child. I'm a woman, a home-based mother. I'm also a homemaker. All I do is household work. Then she says, I go out of the household too. Yes, this is how I define myself. तो probe करने के बाद उन्होंने उनका silences को read करके जब हमने ये probe किया तब उन्होंने इतनी सारी चीजें वो बताई. Please can we go to the next slide? ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया. अब हम की क्वेश्चन, मतलब बहुत सारा है, मैं छोटा छोटा ग्लिम्सेस देख के दिखा रही हूँ. तो पहले मैं पूछती हूँ कि have you come across the term domestic violence prior to this interview? इस इंटरव्यू के पहले पूछती है क्या. तो domestic violence is violence against, मुझे बताना पड़ता है. Domestic violence is violence against women within the household, oppressing them within their homes. She remains quiet. She doesn't respond. फिर मैं और प्रोब करती हूँ, डू यू नो ऑफ एनी फैमिली वेयर सच सिमिलर इंसिडेंट्स अकर? तो वो कहती है, यस, सच इंसिडेंट्स हैपन. सो यू टू रीड थ्रू द साइलेंसेस एंड प्रोब टू गेट द आंसर्स. यही रैपो बिल्डिंग है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो आई आस्क्ड, सो डू यू थिंक, बीच में ब्रेक है हाँ बहुत सा, तो अभी की क्वेश्चंस कैसे निकाल रहे हैं हम. सो डू यू थिंक योर हस्बैंड इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस एट होम? शी सेज यस. For my household, I would say that my husband is the one who causes violence. I did not have a mother-in-law. It was my husband who vitiated the atmosphere at home. So I asked, so you have in your own life too experienced domestic violence? Now she says, yes, Didi, I have experienced a lot. Then I ask, would you please tell me how the violence begins at home? She says, like, see, for little mistakes our children commit, my husband turns violent. He abuses them verbally, so also assaults them physically. When I can't bear it all, I have to intervene, and that is why when he becomes violent and assaults me too. So I am also dragged into it. Now I ask, when did the violence begin? Since when did he start using violence?
Then she says, this all began after the children were born during the first 2 years of marriage. So I ask, why do you think men turn violent? Now this is turning general. Why do you think men turn violent? For that matter, why do in-laws resort to violence? She laughs and she says, I feel that this man, which is her husband, is made that way. He's heartless, or he's irritable, or he's worried about his work. So next slide, please. Now I'll show you how to close the interview. So I come to the last part. So I say, thank you for responding to all my questions. So apart from what we have discussed, would you like to share a little more about what you know about domestic violence? She says, I have told you everything. So I said, this is not what should happen in a family or in society as a whole. Now she gives the answer. Yes, of course, I myself feel what happens in my household is also not right. My husband is of such nature. My children also turn violent. So what can I do? But I advise my sons, very important, that they should not indulge in violence once they get married. So you have to keep building the rapport, and you have to keep saying, thank you, CD. If you wish to discuss anything at any time later about domestic violence, please feel free to reach out to me and talk to me. I once again assure you of anonymity, and thank you once again. This is how you close the interview, right? I mean, the in-depth interview. Okay. So can we move on to the next research instrument? This is called a focus group discussion. Now, a focus group discussion is the other instrument. It is also an interactive discussion, but it is conducted among 6 to 8 persons, and it has a moderator. And the duration is usually from, between 60 to 90 minutes. Same for in-depth interview, because, the participant kind of dries up. We call this process as, drying up. After 60 minutes, it's very difficult to sustain the interview. So this focus group discussion is usually funnel shaped, as you will see. First, it has an introduction, then you have broad opening questions, then you have specific questions, and then you have closing questions, and then you have a post-discussion session. So it's like a funnel. So it's like wide-ended, and then it narrows and tapers down. So why these focus group discussions are very useful? Because it helps us explore new topics, and it also gives us a range of views. एक ही साथ आप 7-8 लोगों का जो point of view है, आप उसको collect कर सकते हैं. And you can also gain insight into typical behavior. कोई specific behavior है ना, उसके बारे में लोगों का क्या idea है, वो भी आ सकता है. और एक और चीज आप कर सकते हैं कि ग्रुप में बैठ के कैसे डिसीजन मेकिंग होता है, उसको भी आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो इसमें क्या होता है कि यहाँ भी ऐसा ही होता है कि एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होता है जिसमें आप रिसर्च को इंट्रोड्यूस करते हैं. फिर उसके बाद आपके ब्रॉड ओपनिंग क्वेश्चंस होते हैं जिससे आप वो फोकस ग्रुप के साथ एक रैपो बिल्ड करते हैं. फिर आपका आता है स्पेसिफिक क्वेश्चंस. इन स्पेसिफिक क्वेश्चन से आप बेसिकली डेटा को कलेक्ट करते हैं. फिर क्लोजिंग क्वेश्चन टू हैव अ क्लोजर विद योर पार्टिसिपेंट्स. एंड पोस्ट डिस्कशन में आप देखेंगे कि आपको फर्दर और भी इंफॉर्मेशन निकल के आएगी. Now, this is one focus group discussion that, my research is on domestic violence. So this is a Mahila Panchayat located in Delhi, and these are all members of that Mahila Panchayat. They're all volunteers. So they are into the arbitration process of resolving cases of domestic violence within low-income neighborhoods in Delhi. So when a woman comes and registers her case, these are the members of the Mahila Panchayat. They discuss among themselves the problem, and they have a discussion on the problem. So this is how I actually participate in these to know how each one has an opinion and how they come up with they think of ways to resolve the problem. So this is an example of a focus group where everyone has an opinion about what is the cause of the violence, what are probably the ways that this violence can be mitigated, what are the other aspects, other support systems that you can offer to the woman in order for her to have a violence-free home. So this is like an example that I would like to show you. The next one is that of the next research instrument is that of observation. Can we go to the next slide, please? Yes.
So this research instrument, it enables the researcher to observe and record people's behavior, actions, and interactions. It may sound very simple, but it involves many tasks like systematically walking, listening, questioning, recording people's behavior, expressions, and interactions, and noting down the social settings. So what do you do with this? You explore new topics of research. It provides a context for the study, and it also describes people's actions in a social setting, that in a particular social setting, how people behave, like in a marketplace, or in a police station, or in public transport, how people behave. So what you observe over there, their actions and interactions, you have to document their body language, the place and social setting, everything has to be documented. One example can be, walking in the same street in the daytime and walking in the same street in the night. So how the setting changes and how the behavior also changes. Now, I would like to take you to a walkthrough through, one of the other researches that I had conducted. Please, next slide, please. Yeah. So this is the handloom hub of Pilakwa. Pilakwa is a small handloom town in Western UP, and it is very famous for block prints. So, unless you walk through the city, you cannot even understand that how women are so deeply linked to this production process. So as you have not been to Pilakwa, but then these photos will give you a very good idea of how the process is taking place. So you can see all the households are involved in this. In the first one, you can see that these bed sheets have been dyed after dyeing and drying, and then they have been dumped outside the households. All this work is done by women. Then in the next one, you can see simple stitching work is going on after those bed sheets have been printed, the block prints have been placed by, again, women. And now these women are doing the borders, the corners. On the top picture, you can see women sitting on the balcony of their house. What are they doing? They, those bed sheets have these little knots that you have to tie. So these women who do all their household work, and you can see this particular family, they are doing so many multiple tasks. They have a small grocery shop also, and they're sitting outside the shop. So they're doubling up as shopkeepers, and they are actually putting those knots on the corners of the bed sheets, because this is something that has to be done by hand. And the one with those pink bed sheets that you can see is that women and children, once these bed sheets are done, they need to be folded before they are transported. So this folding work is being done, and there you can probably see me also sitting along with them, and we are having a discussion, maybe a sort of a, it's not a formal any research instrument, because when you begin research, you need to go to the field, you need to know the field. So this is observation stage, that you go, you build rapport before you can actually go into taking in-depth interviews or focus group discussion. So this is a process through which observational techniques can be used, and that will help you in developing your quantitative research methods. So with this, we move into the analytical cycle, that is the final cycle. So this is the time that you have, you finished collecting your fieldwork. So what you do is, first thing you do is you prepare verbatim transcripts. When you saw my in-depth interview with CD and me discussing with each other, not a single word, not a single silence, not a single, a sigh was missed. Like, I could not show you the whole thing. Every little sound was documented, every single word. Of course, it was done in Hindi. We have translated in the best possible way in English. So you have to translate and you have to transcribe. So to listen to the hearing, and then you have to transcribe and transform them into transcripts. Once you do that, you have to anonymize the data. Suppose I know CD. In between, I might have uttered her name once or twice, that CD, whatever it is. She also would have uttered my name so many times. Like, now you know my name, so I can say she would have said Swagata Didi. So those
aspects also need to be deleted from your transcript so that in no way her identity is revealed. Okay. Once you do that, now you come to the main part of developing codes. Now remember that big design cycle that we had shown. So what you do with codes, you have two kinds of codes. One, you have your deductive codes, and now you have your inductive codes. Now, deductive codes are something that you have got from the theory you have read, the literature you have read. So about domestic violence, no, we know that women do not want to talk about. So that is my deductive code, that women do not want to talk about domestic violence. Okay, so that was my deductive code. And now what are my inductive codes? That yes, she did not want to talk about domestic violence. When asked, has she seen it in other people's homes? Then she slowly starts saying yes. And then she says that yes, it happens in all houses. Yes, this should not happen. So she does have an opinion about domestic violence and the pervasiveness of domestic violence. But from the deductive code, you can come up with your own inductive code. And how will you do that coding? You have to go inside your transcript and take out those portions which prove, which actually generate that kind of an idea. वो आपको बताता है ना कि कैसे आपका मतलब आपका इंडक्टिव कोड है, क्योंकि वो कोड आपने फील्ड से जनरेट किया, वो आपने लिटरेचर से नहीं जनरेट किया, लिटरेचर ने आपको दे दिया, वो डिडक्टिव कोड था। अब आप अपना कोड्स को डेवलप कर रहे हैं। उन कोड से के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, आप पहले अपना कोड आप बना लेते हैं कि ये मेरे डिडक्टिव कोड्स था, इससे मैं ये इंडक्टिव कोड्स निकालेंगे। अब आपको लेकर बैठना पड़ेगा वो पूरा ट्रांसक्रिप्ट, जितने लोगों का ट्रांसक्रिप्ट आपने किया है, और हर एक में आपको बैठकर वो डेटा को कोड करना पड़ेगा, जो आपने इंडक्टिव कोड्स जो भी आपने निकाला है। ये आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, और दो बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो एटलस टीआई है और एक एनविवो। इन दोनों सॉफ्टवेयर्स में आप अगर आप ट्रांसक्रिप्ट को डाल देते हैं और वो कोड आपको दिखता है, और पर करना तो तभी भी आपको मैन्युअली है, क्योंकि आप पढ़ के उसमें आप मार्क कर देते हैं और वो कोड को चुन के। यहाँ अगर हम मैन्युअली कर रहे हैं तो हमारे पास वो ड्रॉप डाउन ऑप्शन नहीं है ना, जब हम हाथ से लिखते हैं तो हमें मे बी हम कलर्ड पेन्स लेकर कर सकते हैं कि मेरा पहला कोड था पिंक और मेरा दूसरा कोड था ब्लू, तीसरा कोड था येलो, तो मैं अपने ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर ऐसे कलर कर करके देख सकती हूँ कि कितने बार मेरे ये कोड्स रिपीट हो रहे हैं। पर अगर आप सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का बस यही एक फायदा है कि आप वहां पे आप जब कोड को क्लिक करेंगे वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ जाएगा और आप उस कोड को आप मतलब चुन सकते हैं, तो वो आपका ऑटोमेटिकली वो जो कोटेशन है वो कोड आपके कोड के साथ मैच हो जाएगा। फिर बाद में जब आप ढूंढेंगे इस कोड में कौन कौन सा कोड्स है, आपको वो मिल जाएगा। इसके बाद आप अपने जो भी थियराइज कर रहे हैं उसको आप डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब करने के बाद आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि आपके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में क्वालिटेटिव रिसर्च या फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू लुक एट द कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में ये रिसर्च हम कर रहे हैं, तो हम कंपेयर करेंगे। और जब हम कंपेयर करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, वही डिजाइन साइकिल वाला वो जो पूरा साइकिल, तो फिर हम देखते हैं कि हम नया थियरी को हम डेवलप कर सकते हैं। उन कोड से फिर आप बहुत अच्छे से नया आप थियरी डिवाइस कर सकते हैं और आप उसको डेवलप कर सकते हैं इस इंडक्टिव फ्रेमवर्क के साथ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ मैं अपना लेक्चर को एंड करूंगी विद द स्लाइड दैट आई यूज्ड राइट इन द बिगिनिंग। क्या क्या था वो टूल्स फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी का? इंटरसेक्शनैलिटी, एम्बॉडीमेंट, रिलेशनलिटी, इमोशन एंड लिसनिंग टू साइलेंसेस। अब आपने देखा ये सारे टेक्निक्स यूज करके हम कितने अच्छी तरह से इन टूल्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और सिर्फ क्वालिटेटिव टेक्निक से, क्वांटिटेटिव टेक्निक से हम ये जो टूल्स है फेमिनिस्ट मेथड्स का, इनको हम यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जेंडर रिसर्च में हम देखते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च लीड्स टू वेरी insightful results. So with this I will stop my presence. I think there is a last slide, it has my email ID. So if you want to ever get in touch with me for any clarification, as much as I know I can help you, because we are all learning.
Thank you. Thank you so much, ma'am, for that wonderful lecture of yours. I would request all the participants, if they have any kind of questions that they want to ask ma'am, ma'am will be happy to help. The participants can unmute themselves and interact with ma'am directly. Yes, before we take up questions, Swagata, it was really very nice. You came down so simply on this new concept of qualitative. You see, qualitative research is in its nascent stage in India. We are so much into data, and we always look up to data, and we think that data can give us results. This has happened throughout, like yesterday Rekha Pandey was telling that why do we lack in publishing good research papers, because not that we don't have the knowledge or we don't have the skill, but it's that we emphasize more on quantity, and we try to prove everything mathematically, but everything life is not only mathematics. And I was, while listening to you, I just remembered one thing, that Sudha Murthy, we all know who Sudha Murthy is now. She's the mother-in-law of the Prime Minister of Great Britain. So when Sudha Murthy wanted to do a research on Devdasis, she was writing a book on Devdasis, and I think many of you know the story. तो वो देवदासियों से मिलने गई थी because she wanted to bring out the pathos, the living condition and their poor, state of emotional state. She wanted to bring it out. None of the Devdasis responded to her when she went. फिर उनके father ने कहा, his father told her that if you wear jeans and if you wear a kurti and you go and meet the Devdasis, they'll never respond to you. So that is the first thing, and I think Swagata, you emphasized on that in order to break the ice, we have to be one amongst them, because usually it is not the respondent and the interviewer who goes, and then they will not be at ease in divulging certain information. But the moment they feel that you are one amongst them, you're sitting with them, you're eating or drinking with them, they'll open up. तो ये एक नया टेक्निक है, माय डियर पार्टिसिपेंट्स. आप लोगों के सामने मैं हर तरह की कोशिश कर रही हूँ कि आप रिसर्च में जाए. ये मत सोचिए कि मुझे मैथ्स कम आता है या मुझे सॉफ्टवेयर का ज्ञान नहीं है तो आई कांट डू रिसर्च. नो, even if you know how to write nicely, if you can document emotions, I think you can go ahead with that. So now we leave it to the participants. Please, आप लोग question कीजिए. Yes, Kaushal, you wanted to know something about questionnaires. Is it okay? Okay, Kaushal, ma'am. are you satisfied, Kaushal? Okay, ma'am. Very nice. Yes, ma'am. Very nicely cleared all things. I am listening so carefully to madam. Okay. बहुत बहुत मैडम को धन्यवाद. मेरा बहुत कंफ्यूजन जो था बहुत दूर हुआ और मुझे इससे बहुत बेनिफिट हो रहा है. मैं 3 दिन लगातार आप लोग का सेशन सुन रहा हूँ. मैडम आपका मैं बहुत बहुत थैंकिंग कर रहा हूँ कि ऐसा वर्कशॉप होना चाहिए हम लोग स्टूडेंट के लिए, हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए, और एक्चुअली जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उसके लिए और ज़्यादा ये बेनिफिशियरी है. और मैडम का सेशन तो बहुत ही बढ़िया लगा आज और बहुत सारा चीज क्लियर हुआ. थैंक यू मैडम. तो वी आर एक्सपेक्टिंग, कौशल, वी आर एक्सपेक्टिंग योर प्रपोजल नाउ. आप लोग प्रपोजल लिखेंगे, सबमिट करेंगे, और प्रपोजल के बेसिस पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है 40 दिन के अंदर अंदर, एंड यू विल बी गेटिंग अ कैश प्राइज. हाँ, तो आपको पता है ना, मैंने आज सब कुछ भेज दिया है. हाँ मैडम भेजें, प्लीज कोशिश कीजिए, एंड वी आर ऑल देयर टू हेल्प यू आउट. ओके मैडम. ओके, थैंक यू मैडम. एनीबडी एल्स? If not a question, you can share how the session was. We'd like your feedback. Yeah. Right? There are, we are having the same people like Ravi Patel, Afreen, then Grace Bahalan, anyone. I can see these names are very common. Prem Kumar Karan. आप लोग
हर रोज अटेंड करते हैं, कुछ फीडबैक दीजिए तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। जी प्रेम कुमार, नाइस सेशन, आपने कुछ सीखा? कोई डाउट नहीं है? Ma'am, session was very clear for all of them. I think it was very Ma'am. helpful also, I believe. Yes, Prem Karan, please. Everything is very clear, ma'am. No doubt. Nice session. ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी के बेसिस पे बनाएंगे कुछ, ठीक है? Yes, ma'am. Yes. Yes. Zarur. And from Karnataka, we have Mulla sir. Dr. Mulla, you are a regular listener. So thank you very much. Can you give some of your inputs, please? Yes. Please So unmute please yourself. unmute yourself. Unmute yourself. वेरी गुड इंफॉर्मेशन गिवन मैडम, बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी विथ। यस, आप तो अर्ली रिसर्चर्स में नहीं आते हैं ना सर, आपने तो रिसर्च कर लिया है। कर दिया मैडम, कर दिया। कर लिया, अभी आप दूसरों को रिसर्च करवाते हैं? हाँ, मेरे हाथ में एमफिल कंप्लीट किया 4-5 जने, दे आर कंप्लीटिंग एमफिल मैडम। Under him. I think we have lost him. Okay. Yeah. Ma'am, should we wind up? Ajay Korai. Yes, ma'am. This is really great session, ma'am. I think we have lost a little bit of connection with Devjani ma'am, I think. Okay. This brings us to the end of this session, and I would now like to request Dr. Pinky Pandey Sahai to kindly propose the vote of thanks. Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes. Okay. You're audible, Pinky. Okay. I am Dr. Pinky Pandey, and I consider it a great privilege to propose the vote of thanks for day 3 of the 5-day international workshop on research capacity building for early career researchers. I would like to express my gratitude to our resource person of the day, Professor Swagata Basu. Thank you, ma'am, for explaining everything in such a lucid manner to our participants. My sincere gratitude to our principal and chief patron of the workshop, Dr. Sister Jyoti. Thank you, sister, for your constant support and guidance. I would also like to thank our vice principal, Dr. Sister Shobha. I would like to express my gratitude to our workshop coordinator, Dr. Devjani Roy. Thank you, ma'am, for giving me the opportunity to be a part of this workshop. Special thanks to our sincere participants, without whom this workshop would not have been a successful one. We look forward to your presence on the 4th day of the workshop as well. Thank you. So thank you once again, Swagata. I would like to record my deep gratitude to all of you for inviting me, and it was really a It was nice interacting online, and we hope to meet offline very soon. Yes. So thank you so much. Thank you, everyone, sister. Thanks to you, Prachi, Pinky, and all the participants very meticulously and regularly for joining us on time. Thank you so much. So can we leave now? Yes, ma'am. Just a small request to the participants, kindly fill in the attendance, the link that has been shared. We'll also share it in the WhatsApp group. Thank you. We'll meet tomorrow. And Swagata, your this chat box has a lot of, good messages for you. Oh, thank you. Thank you so much. Thank you for the opportunity. Thank you, ma'am.